Hello everyone, I Roma Chirani welcome you all. Thank you for being a part of this webinar. This webinar is presented by Block Self Improvement and Befikar Pata. So, our today's guest is Mr. B.K. Hitesh. He is a committee member of Brahmakumaris Youth Wing and a meditation instructor and a spiritual guide by profession. He has 9 years of experience. Mr. Hitesh, we all welcome you with all of our hearts. So now I would like to invite Mr. B.K. Hitesh to let us know about positive self-talk and how it is important in our daily life. Thank you so much for such a warm welcome, and it's so good to be here. And thank you for having me. And looking forward to a superb session. It's a very beautiful topic which we are discussing today: the power of self-talk, positive self-talk, and of course, there is a constant chatter in our mind. If we look closely, if I observe ourselves, अगर हम खुद को observe करें, there are voices inside us, you know, when we start doing something, when we think of doing something, you know, taking a decision, even smallest of the decisions, let's say, uh, what do I do today? What do I make for breakfast, lunch? There is a constant chatter, right? So that is the self-talk. We are talking to ourselves. We are talking to our mind. So self-talk is always there, but what we are trying to do, what we are um, striving for, is that how to make it a positive self-talk so that we feel good, we take right decisions in life, and we let go of our fear. Because if we see, uh, there are two kind of voices in us, you know. One stops us from doing something good, which is good for us. Let's say we want to start exercising, we want to start meditating, we want to study, but there is something which stops us, which says no, 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 don't do it, be like that, ऐसे ही रहो जैसा लाइफ में चल रहा है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, right? So there is a voice which is negative, and there is a positive voice also which encourages, which says that no, do it, it's okay. So it's all about what we feed to most to, मतलब हम किसको क्या ज्यादा फीड करते हैं. अगर हम नेगेटिविटी को ज्यादा फीड करेंगे तो वो नेगेटिव सेल्फ टॉक ज्यादा होगा, एंड अगर हम पॉजिटिव, अपने पॉजिटिव साइड को ज्यादा एम्पावर करेंगे तो फिर कॉन्स्टेंटली एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक चलने लग जाएगा. सो सेल्फ टॉक इज अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ what you are doing, even what you are thinking, because we are not conscious about what we are thinking also. Throughout the day, our mind is constantly running. We even do not know, you know. अगर आज भी पूछें किसी से कि पूरा दिन क्या सोचा, were you aware, was I aware of what I was thinking throughout the day? So mostly we will find that we were not aware. We were either thinking about the past events, maybe from the childhood or some person, but most of it was negative, right? So self-talk, positive self-talk is about changing our way of thinking, because right now we are so much engrossed. मतलब पूरा दिन हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, है ना, या फिर वीडियो हो गया, कुछ मूवी हो गया, सीरीज हो गया, एंड लॉट ऑफ इट इज फीडिंग नेगेटिविटी. लॉट ऑफ इट इज not so real thing they are serving us. So what is happening, we have started thinking the beliefs, the wrong things as true, which means that we do not know this is truth or not, but we are just taking it as a truth what is being served to us, right? So self talk gives us the power to not get influenced by the things we are watching, we are listening, and to be able to take
decision from ourselves on our behalf, what is truth for us, what's give me happiness, right? For example, that I give you a little, very small example, that say uh, two people are in a relationship, in a good relationship, बहुत अच्छा relationship चल रहा है ना, but when we look at the movies, social media, तो क्या होता है, हमारे माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो गई है दैट रिलेशनशिप्स विल ऑलवेज गो स्मूथ, है ना, कभी इशू नहीं आएगा, परफेक्ट स्टोरी होती है। तो हमारी लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, उस रिलेशनशिप में कुछ हिकअप्स आते हैं, so we start thinking that this is not right and we are not able to cope up with that reason, because the belief has been set in our mind through all these external factors that things will always go perfect, and it's not the case always. So self talk, self realization is going to give that break to ourselves, make us immune to that external pressure, and to tell ourselves the truth. अपने आप को सच्चाई दिखाना, reality दिखाना is all what is self talk. So this is what we are going to discuss today, that how we can talk to ourselves in a better way. We talk to ourselves, but not in a good way. We criticize ourselves a lot. We think too much about people outside. So uh, it does not give us the happiness. It does not make our a day a beautiful day. So we are going to talk about how we can talk to ourselves for a positive and happy day. Yeah. Totally agree. So, like nowadays, we are unable to find self love. It's very hard to find it because we have to engage in people's ideas, people's emotions, right? So, how this positive self love lead to self love and confidence? Yes, very rightly you said that we define ourselves with the perceptions, with the thoughts, with the words of what people say to us. If somebody criticizes us, we think that we are not so good. Maybe we are not so good, right? People say bad things about us, and we start taking it as a reality, right? So this is not so good for us, you know. So the thing is that what we talk to ourselves matters a lot, right? जब बाहर की बातों से हम अफेक्ट होते हैं, राइट, कि बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, तो हम वो अपने आप को से वनरेबल हो जाते हैं, उनकी बातें हमें अफेक्ट करने लग जाती है ना। Let's say we are in a family, we are with friends, we are in relationship. So what happens, uh, we think too much, right? When somebody criticizes us, हमें कोई कुछ गलत बोल देता है, हम कुछ काम करते हैं, तो क्या होता है कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, बहुत जैसे बच्चों के साथ क्या होता है, पेरेंट्स उनको नहीं करते हैं, या हस्बैंड के साथ होता है, वाइफ उनको नहीं करती हैं। ये बहुत कॉमन इशू आता है दैट दोनों, दे डू नॉट वैल्यू मी, दे डू नॉट रिस्पेक्ट मी। सो वी आर वनरेबल टू दोज पीपल्स ओपिनियन व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट आवरसेल्फ। मतलब हम अपने आप से क्या बात करते हैं वो मैटर करता है। जब हम अपने बारे में श्योर हो जाते हैं, व्हेन वी गेट श्योर अबाउट आवरसेल्फ, about our weaknesses, about our strengths, then the other people's opinions stop affecting us. Issue तब आता है when we don't talk too good to ourselves, right? So self talk for self love uh, is to immune ourselves from other people's opinion. वो क्या कर रहे हैं उनका मैटर नहीं करता है, but we need to understand ourselves a lot more,
है ना। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं एग्जांपल, बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आई हैव एन इश्यू ऑफ गेटिंग इरिटेटेड इन स्मॉल थिंग्स, है ना, मुझे इरिटेशन हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। सो हमें ये समझ आ गया कि मुझे इरिटेशन होती है। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग इट, कि हाँ होती है, इश्यू होता है, राइट। हम एक प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है, लेट्स से फैमिली में किसी ने बोल दिया, किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि आप तो बहुत इरिटेट होते हो, तो हम परेशान हो जाते हैं कि वो मुझे ऐसा बोल दिया उन्होंने, है ना, फिर दुखी हो जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू एक्सेप्ट आवर वीकनेसेस। हम में जो भी कमियां हैं, हमको उसे स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए अपने आप से ये बात करना बहुत जरूरी है दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई फील, हाउ आई फील, व्हाट आई फील एंड हाउ आई फील अबाउट मी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नो वन एल्स इज। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर सेल्फ, है ना, कि मैं जो फील कर रहा हूं उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, कोई और नहीं है। ठीक है, क्योंकि सी हम क्या करते हैं, बहुत ही इफ वी सी आवर कन्वर्सेशंस, हम क्या करते हैं, लेट्स से कोई कहता है कि यार दिस पर्सन इज टू मच इरिटेटिंग, है ना, तो क्या ये नहीं बोलते कि आई एम इरिटेट, आई गेट इरिटेटेड, वी से दैट दिस पर्सन, दिस थिंग इज टू मच इरिटेटिंग। So what we are doing, we are putting blame on the other person or the external situations. So उसको हटाकर क्या करना है, अपने ऊपर उसको लाना है responsibility, that if I'm getting agitated, if I'm feeling bad, if I'm getting angry, I am responsible for it, right? So second thing, that we accept ourselves, I accept myself, who I am, where I am। मैं जैसा भी हूं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं। मैं अपनी कमियों पर काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेसेस। बाहर के लोग तो बोलेंगे, बट आई एम नॉट बीइंग डिफाइंड बाय इट। मैं उनकी डेफिनेशन को अपनी डेफिनेशन नहीं बनानी है। बट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ मैटर्स, एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई नो माई वीकनेसेस। उसके लिए अपनी वीकनेसेस को जानना जरूरी है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बैठकर देखना पड़ेगा कि मेरी वीकनेसेस क्या है, और उसको फिर ऑन करना होगा, उसको स्वीकार करना होगा कि ओके ये मेरी वीकनेसेस है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, होती हूँ, अब मुझे इस पर काम करना है। अब बाहर वाले क्या बोले वो फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो ये प्रैक्टिस करेंगे तो सेल्फ लव, सेल्फ लव इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करना, खुद के पास्ट को एक्सेप्ट करना, मैं लाइफ में जहां हूं उसे अपना कार्मिक अकाउंट समझकर उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देर आर सो मेनी अनहील्ड वुंड्स, है ना, वो हील नहीं हुए हैं। फिर हम कहते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं करता, मेरे फादर ऐसा क्यों नहीं करते, मम्मी ऐसा क्यों नहीं करती, भाई ऐसा क्यों नहीं करता, मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं करते। बिकॉज वी हैव नॉट हील्ड आवरसेल्फ, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड, वी आर लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस फ्रॉम आउटसाइड। सो श्योर शॉर्ट एक तरीका क्या है, खुद को बैठकर स्वीकार करे, आराम से एक्सेप्ट करे, मैं जैसा हूं, सब में कमी है, मुझ में भी है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, स्वीकार भाव। So positive perspective, sir. But sir, we live in a society that people discourage or insult each other. So that time, what kind of self-talk would help us? Yes, we can say this to ourselves, that the point is to realize, मेन बात है रियलाइज करना, दैट बाहर की चीजें मुझे ट्रिगर कर सकती हैं, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आर द थॉट्स रनिंग इन माय माइंड। बाहर की चीजों से मेरा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है,
बट रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? मैं हूँ. So the best thing which we can talk to ourselves, that whatever I am feeling right now, I am responsible for it. मतलब ऐसा नहीं है कि दुखी होकर इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अच्छा मैं जो सोच रहा हूँ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए, उन्होंने ऐसा किया और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. नो, डोंट टेक इट लाइक दैट. टेक इट दैट इफ आई चेंज माई थॉट प्रोसेस, देन आई कैन चेंज माई फीलिंग्स. ये जो हमारे बिलीव्स हैं, ये जो ओल्ड एज रॉन्ग बिलीव्स हैं, वही हमें परेशान करते हैं. मतलब सिंपल, इफ आई से वी हैव डिफाइंड पीपल, हमने क्या किया हुआ है? ही इज माई फादर, एक लेबल लगा दिया है ना. ये फादर है तो इनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, इनको मुझे फ्रीडम देना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये मेरे हस्बैंड है, इनको ऐसा करना चाहिए. ये मेरे सीनियर है, इनको ऐसा करना चाहिए. सो हमने क्या किया है? हमने अपने बिलीव्स बनाए हुए हैं, है ना. आपने देखा होगा, कहते हैं इतने बड़े हैं, इनको इतना भी नहीं पता, है ना. बच्चे भी जनरली क्या बोलते हैं कि पेरेंट्स के बारे में, इतने साल के हो गए, इनको इतना भी नहीं पता, राइट. तो वो क्या हो रहा है? ये हमारे गलत बिलीव्स हमारे इरिटेट, दुखी, परेशान होने का रीजन बन रहे हैं. जो आप कह रहे हैं कि दूसरे जब क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं, देन इट अफेक्ट्स अस अ लॉट. सो आई नीड टू चेंज माय वायरिंग हेयर. आई नीड टू चेंज हाउ आई परसीव दिस वर्ल्ड. तो आई हैव टू स्टार्ट सीइंग पीपल that whoever they are, stop putting that label. I don't put any label on the people. I see them as they are. They are a soul playing this part, and I am responsible for what I feel. Simple. मैं जो feel कर रहा हूँ, I am responsible for it. No one else is. I remember this very beautiful quote from Buddha, that uh, a person who uh, blames everyone uh, for his misery has not started the journey of awakening, of healing. A person who blames himself is halfway there, and a person who blames none has reached that level. So ultimately, पहला हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. इट मीन्स कि द पार्ट आई एम प्लेइंग, that was given to me, no one is responsible for it. I accept myself, but at least half तो करें, फिर आगे उस पर जाएंगे. If we talk about addiction, how this technique, positive self-talk, help us to break an addiction? Because substance abuse is a major factor in this world now. Addiction can be of a thought also, right? Compulsive thinking जिसे कहते हैं कि I'm constantly thinking about my past, about a person, about that thing, कुछ भी, है ना. And addiction can be, uh, you know, आजकल तो n number of addictions are there. Even social media and mobile addiction is also there. So what we can do, what we can practice is that, see, I read somewhere that every 2 seconds there is a thought which comes into our mind. हर 2 सेकंड में एक नया थॉट यूजुअली हमारे माइंड में आता है ना. वो थॉट्स क्या हो सकते हैं? वो थॉट्स हो सकते हैं पास्ट के, फ्यूचर के, या फिर एडिक्शन के भी हो सकते हैं, है ना. मतलब द थिंग विच पुल्स अस, वो कुछ भी हो सकता है. हम अभी बैठे हैं, वो हमें कोई भी चीज ऐसी है जो हमें खींच रही है अपनी तरफ, वो एडिक्शन है, राइट. So first thing what we have to do, we have to practice detachment from our mind, which means whatever the thought which has come, I have to tell myself, I am not my mind, I am not my thoughts. So what is going to happen with this, that
you will create a space between your thoughts and yourself, है ना. सी बहुत सी कंफ्यूजन है. मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, दैट यू नो who am I then, mind क्या है, etc. But first thing, let me tell you, practice this, that I am not my mind, I am not my thoughts. हम अपनी थॉट से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई हो जाते हैं. जो भी थॉट आती है हम उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं मैं ये हूँ. सो वो थॉट्स कुछ भी आ रही है, लेट्स से एक एडिक्शन की आ रही है ना, कोई चीज खींच रही है. एडिक्शन कैन बी ऑफ एनीथिंग, यू नो, वट एवर इज पुलिंग अस. सो आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट आई एम नॉट माई माइंड. सो क्या हुआ, वी नो, आई नो दैट इन 2 seconds मे बी, वो हो सकता है, वो अगर थोड़ा एडिक्शन की है, वो कंपल्सिव थिंकिंग है, तो वो थोड़ा सा रुक सकती है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए रुक सकती है. बट मुझे बस ये महसूस करना है दैट इट्स ओके, इट विल गो, इट विल गो. तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे, सो हमारा हल्का सा उससे डिटैचमेंट हो जाएगा, अपनी थॉट से, अपने माइंड से. क्योंकि एक थोड़ा सा ब्रेक, एक थोड़ा सा पॉज जब ले लेंगे, तो हम उस चीज को करेंगे नहीं. वो जो थॉट आई कि मैं ये खा लूं, मैं ये आई शुड टेक दिस, आई विल फील गुड. So we are creating a space, we are taking a pause, we know that it will go, है ना, वो रहेगा नहीं. थोड़ा सा उसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज चली जाएगी, है ना. सेकेंड थिंग विच वी कैन डू इज, लेट्स से एनीथिंग इज पुलिंग अस, है ना, कोई चीज खींच रही है, वी कैन डू दैट वी कैन टॉक टू आवर सेल्फ, है ना. सी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आई एम नॉट दिस थॉट, दिस विल गो अवे, आई हैव द पावर टू स्टीयर, है ना. सेकेंड थिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन आस्क ourselves again and again that what do I want, temporary pleasure or permanent happiness. जो भी एडिक्शंस हैं, कितनी भी तरीके की हैं, they gives us that temporary pleasure but it takes away our power. मतलब मान लीजिए यूट्यूब पर कुछ देख रहे हैं, या आजकल तो छोटी छोटी वीडियोस आती हैं, 1 घंटा देखते रहते हैं, पता भी नहीं लगता है, राइट. लेकिन क्या होता है 1 घंटे के बाद, डू वी फील मोर पावरफुल, डू वी फील मोर एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, हैप्पी, or we feel powerless, or we feel that somehow a low, little low, होता है ना. same is the case with, let's say, smoking or any other addiction. उस समय करते हुए तो थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, उसके बाद we feel guilty about it, we feel low about it, है ना. सो हम क्या करते हैं, क्या होता है that any addiction is going to give you that pleasure for a second, for a minute, but it will snatch all your powers from you. That's why we will not be able to judge correctly, we will not be able to discriminate, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, वो सब चीजें हो जाएंगी. So, इसलिए अपने आप को बार बार ये करेक्ट करना बहुत जरूरी है कि what are you looking for? Are you looking for temporary pleasure or permanent happiness? So if this is going to give you the temporary pleasure, but if you want permanent happiness, then don't do it. Don't take it. Just today, जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो एडिक्शन ब्रेक होने लग जाएगा. Sometimes it's hard to make choices in the environment. So how does this positive self-talk help in better decision making? Yeah, very good question. See, one thing which we can do is this only. First thing which we can do before deciding anything, before even starting anything, ask yourself this: what are you looking for? Start making this habit by talking to yourself that what are you looking for? Are you looking for temporary pleasure or permanent happiness? कोई भी काम करने जा रहे हो, let's say, see,
in this time, social media very important, internet, mobile very important, but just practice one thing before opening that Instagram account. Just ask yourself, what are you looking for? Temporary pleasure or permanent happiness? What are you looking for? Are you looking for validation from people? Are you looking for acceptance from people? क्या करना चाहते हैं? क्या बाहर से ढूंढ रहे हैं? You know, again, will you find that outside? क्या बाहर से validation मिलेगा? बाहर से attention मिलेगा तो ही अच्छा लगेगा? Do you want that permanent happiness? Right? So first thing we can do this, and of course, now let's say you're deciding the day is also very important. Let's say you have an important decision to make today, or even let's say small things, like I talked about, uh, let's say a mother, है ना, उनके लिए तो ये इशू रहता है कि आज खाना क्या बनाना है, राइट? इतना छोटा डिसीजन भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, थिंकिंग क्या करना है, क्या बनाना है, राइट? सो इन द मॉर्निंग, टेकिंग थिंकिंग अ मेजर डिसीजन, चलो ये इतना मेजर डिसीजन नहीं है, बट डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट इट, जस्ट डिसाइड इट। प्रैक्टिस करने से ही होगा, है ना? क्विक डिसीजन लेते रहेंगे तो वो हमारा हैबिट बन जाएगा। बट द बेस्ट वे इज टू चेकिंग योर इंटेंट, है ना? ये जो व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, दैट आस्किंग योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट, what am I looking for, temporary pleasure or permanent happiness? This is going to take us back to the right way, right path. Otherwise distractions वही होंगी that is going to give us the temporary pleasure, but it is going to take away all the powers from the mind to decide, to judge. So I think this is going to help in better decision making. There is a question from today in our chat box that how to stop the talkative mind. Yeah, talkative mind in the, it means that the negative thoughts are more coming in my mind, right? Because the frequency of negative thought is like this, and frequency of positive thought is something like smooth, right? So talkative mind means there is constant negative uh, thinking which is running, and this negative thinking will be of maybe past, you know, mostly it is of past, or either or of the future, or of the person कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये नहीं होना चाहिए था, I should not have done that, that person should not have done that, what is going to happen in my life in the future, this person is not good, यही चलता रहता है, right? And फिर क्या होता है कि again, should I do this, should I not do this, again negativity chalti rehti hai, right? So the best way to do it, being conscious about, see right now what the issue is, that human mind is very beautiful, very powerful, but we are not using it, it is using us. So first thing is to accept it, that it is using us. See, हम क्या कहते हैं, मान लीजिए एक बच्चा पढ़ रहा है, वो क्या कहता है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, राइट? मेरा कहीं घूमने का मन कर रहा है, which means my mind is telling me to do this, not to do this. So who is using who? Am I using my mind, or mind is using me? So the sooner we accept it, that mind has taken powers from us in the sense, let me come to this point, that I have to tell myself that I am more powerful than my mind, which means, see, I told you about, I am not my mind. Then who am I actually? मैं असली में हूँ कौन फिर, right? So I am a soul, है ना? हम सबने सुना होगा, लेकिन
कभी समझा नहीं होगा. And even if I talk about me, after studying so many books, so many self-help books, spiritual books, even I had no idea what is this. But sooner I started realizing this. So I am a soul. I am a being. I am an energy, and mind is a faculty of soul. मन आत्मा की शक्ति है. It's like a soul is a king and a mind is minister. मंत्री हैं वो राजा के. सोचिए कि if a minister overpowers the main head, let's say prime minister, what is going to happen? That is not a good scenario, not a good thing, right? So I have to tell myself that I am a soul and my mind is my minister. It listens to me. My mind is not me. I am self sovereign. Self sovereign क्या मतलब होता है? Sovereignty क्या होता है? राज्य, right? A king runs the entire state, right? Similarly, I am a king. I am the owner of my thoughts. I am not my mind. So what is going to happen? We are going to realize, we are going to experience that I can control my mind. I can guide my mind. मैं अपने मन को समझा सकता हूँ. So first thing, taking control of your thoughts. And second thing, telling yourself again and again that I am a soul and I am self-sovereign. मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ. इसका मतलब होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि I, the soul, is a king and my mind is my minister and my minister listens to me because I am the king. तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो हमारा माइंड हमारी बात मानने लग जाएगा. तो जो वो पावर का यू नो वाइसा वर्सा हुआ वो वापिस आ जाएगा. हमारे पास वो अथॉरिटी आ जाएगी मन को समझाने की. बट in this case, one thing comes very handy, that we have to listen to uh, every day we have to make a habit of listening some good sessions like this, reading good books, attending spiritual sessions, making a habit so that we get to collect a lot of good self talks which we can talk to ourselves, ask ourselves for self reflection, self realization, so that I can tell my mind. So आज से हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि I am a soul, the king, and my mind is my minister, and it listens to me because I am the king, right? तो जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, वो जो जिन्होंने बोला टॉकेटिव माइंड है, वो बार बार कुछ कुछ बोलता है, वो तो बोलेगा, वो आपको कहेगा कि there is something in the past. It is looking for something. Mind is looking for something, है ना? So you have to tell yourself, you have to tell that no, I'm going to tell you what to think right now, how to feel right now. And this time you have to be in the present. You have to think that I am a king. You have to accept yourself. जो भी हमने अभी तक बात की है, आगे भी करेंगे. बट मेन प्रैक्टिस है कि इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें. What practice we could do to detach from the mind? So I think this is the thing which I just shared with all of you, that creating a space that I am not my mind is going to help you a lot. Because the thing is that we define ourselves, we identify ourselves so much with our thoughts. अगर माइंड में कुछ नेगेटिव आ जाता है तो हम उसी से ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद द थिंग्स, विद द पीपल, एंड इट बिकम्स एन इल्यूजन. वो एक बहुत ही इल्यूजन वाली लाइफ बन जाती है जो कि रियल बिल्कुल नहीं है. उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है.
एंड हम उसी ही अपनी सेल्फ क्रिएटेड लाइफ में जीते हैं. एंड व्हेन इट ब्रेक्स, when we face the reality, we feel very, very bad. So what we have to do, we have to detach ourselves from our mind by saying this again and again, that I am not my mind, and this is not what the reality is. Whatever the thoughts I am getting may not be the true, may not be right. लेकिन उसके लिए एक चीज बहुत करना होगा. हमारी जो इंफॉर्मेशन है, द काइंड ऑफ थिंग्स वी watch, listen, we have to be very, very careful about it. Because see, I ask kids that in the evening, today in the evening, if you watch a horror movie, then what kind of dreams you're going to get in the night? Horror dreams, right? डरावने सपने आएंगे. Because what information I gave to myself, it is getting processed now. So we have to check that what kind of information we feed. न्यूज कितना देखते हैं, सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं. एम आई लुकिंग समथिंग नेगेटिव, एम आई सीइंग समथिंग नेगेटिव which is not good for my mind? Don't think that it is not going to matter. Everything is being stored, everything is being absorbed, processed by our mind, then with our brain, nervous system, everything is changing and we have no idea about it. And it's a trap, we are going again and again, falling again deeper and deeper into it, and it's not a good place to be in. So by talking this to ourselves, that which I said, that temporary pleasure or permanent happiness, who am I actually if I'm not my mind? Am I this person? Am I this relationship? Am I my thoughts? Am I this thing? अपने आप को उससे डिटैच करते रहें, and just tell yourself that I am a soul. And by saying soul, I means that there are qualities of the soul. We have to experience it. हमें उसको experience करना है ना? There are 7 qualities of the soul: peace, purity, bliss, power. So purity, peace, happiness, love, power, knowledge, bliss. So how do I practice this? How do I say? हम क्या कहते हैं जनरली अपने कन्वर्सेशन में, जब बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्या कहते हैं? अब क्या चाहिए? मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, दुखी हो गए, स्ट्रेस हो गया, क्या कहते हैं? बस अब कहीं जाना है और शांति चाहिए, बोलते हैं ना, चाहिए बोलते हैं. बट द ट्रुथ इज, बाय ऑल द स्पिरिचुअल स्टडीज, इसका एसेंस ये है that I am not looking for peace, I am peace. Which means don't look for happiness, don't look for peace, just say I am peace, I am a soul, and I am peace. फर्स्ट थिंग इज, हम पहला कॉन्ट्राडिक्शन, पहली लड़ाई किस में होती है? हम मानते ही नहीं है आई एम पीस, राइट? क्यों? नेचुरल क्या हो गया आजकल? किसी को कहते हैं ना, एंड आई एम श्योर many, not all, but many in the audience also must be thinking, एक थॉट आ रहा होगा because of that programming, कि नहीं नहीं, अगर कोई गुस्सा करे तो गुस्सा ही ना करे, अगर कोई हमें गलत वर्ड्स यूज करे तो हम क्या चुपचाप बैठे रहे, ये शांत, ऐसा? इट्स नॉट दैट मीन, बट द नॉर्मल, normal is also very hard to define nowadays, but people say that गुस्सा करना तो नेचुरल है, उसने गलत बोल दिया तो मुझे भी तो गलत बोलना ही है, नहीं तो उसे लगेगा आई एम नॉट पावरफुल, आई एम पावरलेस, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी बिलीव्स. सो हमने अपने आप को इतना दूर कर लिया. अगेन, आई एम नॉट
we are not blaming ourselves, but because of all the external situations, external things, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है, एंड हमने समझ लिया है दैट पीस इज नॉट इजी एंड पीस इज नॉट माय नेचर, है ना. बट टाइम इज टू रिवर्स इट, टाइम इज टू करेक्ट इट. अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा, अपने आप को पूछ कर, कि सही में पूछ कर. ऐसे आई आस्क यू कि डू, इफ गिवन अ चांस, है ना, कि आपको आधा घंटा ना गुस्सा करना है, बहुत ज्यादा गुस्सा करना है, विल यू बी एबल टू डू दैट? डू यू वांट टू डू दैट? अगर Without आपका any बस reason, चले तो. हाँ. without any reason, I won't. And if there is a reason, then I will definitely do. सी, सो इफ गिवन अ चॉइस कि आपको आधा घंटा शांत रहना है, खुश रहना है, या आपको आधा घंटा दुखी करना है, everyone is going to choose peace, right? कोई ऐसा नहीं कहेगा कि no, I want to, I feel good when I get angry, है ना. So first thing what I have to tell myself that I am peace. Peace is my original nature of my soul, of me, the soul. All the disturbance, all the sadness, everything, all those unpleasant emotions are because I consider myself as this body, as this relation, body consciousness. So more I practice that I am a soul, more I'll feel that I am, I'll experience my true nature. And उसी को ही जब इतना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे अंदर वो पावर्स भी बढ़ेंगी, पीस भी बढ़ेगी, और वो जो नेगेटिव जो भी था उसका इन्फ्लुएंस कम होने लग जाएगा. If positive self-talk helps in managing anxiety. See, yes, of course. See, anxiety, of course, there are many levels to anxiety, and there are many reasons for anxiety. But अगर मैं एक जनरल एंजाइटी की बात करूं, वेरी जनरली आई एम सेइंग कि क्योंकि ऐसा होता है हम वर्ड्स भी बहुत बिना सोचे यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि ये एंजाइटी है या जस्ट एक थोड़ा सा फियर है, क्या है ना. बट द पॉइंट इज दैट the reason of these mental illnesses, the root cause is that there is a disbalance, है ना. ऑफ कोर्स वो ब्रेन के लेवल पर आ जाता है, केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है. बट if I practice more peace, if I practice silence, if I do not drain too much of my energy into external things, then I can restore all these things. So self-talk help us in increasing those inner powers and changing the wiring of the brain by telling it again and again that what is, what needs to be changed, what is truth, what is false. So of course self talk helps a lot, और अल्टीमेटली यही हेल्प करता है, राइट. अगर हम थेरेपीज में भी जाते हैं, अगर हम मेडिसिन भी लेते हैं, बट काम तो यही करेगा ना. until and unless I talk good to myself, I tell myself that no, this is a wrong thinking, you are this is your wrong thinking, this is your wrong beliefs, तब तक चेंज परमानेंट नहीं आएगा ना. So of course self talk is the solution for that. And generally again वही बात कर सकते हैं that I focus on myself and I have weaknesses, but I own it, I accept it. हम इशू तभी आता है, फियर तभी होता है, एंग्शियस मान लीजिए सोशल एंजाइटी है, क्यों होता है? वी आर नॉट श्योर अबाउट आवरसेल्फ, वी आर सो फियरफुल, वी आर लिविंग फॉर पीपल. जब हम लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ देते हैं, ये सोचना छोड़ देते हैं, when we start living for what is important for me, what is truth, what makes me happy, then we let go of all those fears and we start becoming confident about ourselves, start living a happy and peaceful life, and that anxiety starts fading away.
quite informative session for all of us. Today, we are able to know the importance of positive self-talk. How to become emotionally stable. Again, telling yourself again and again that my emotions, my feelings are not dependent on the external things. हम क्या कहते हैं कि इस वजह से मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया, इस वजह से ऐसा हो गया, राइट? सो हम जितना जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, द थिंग विच आई शेयर दैट माय फीलिंग्स आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जो फील कर रहा हूँ, I am responsible. I need to change my thought process by knowing the truth, by being more spiritual, by reading, listening to some positive things. I need to change it, and when I change it, again, it's all about taking responsibility of your own, and we'll stop blaming people outside. है ना? जितना immune हो जाएंगे बाहर लोगों से, चीजों से, will be more emotionally stable. Totally agree. So, there is a one question from Detachment. What is the difference between positive self-talk and positive thoughts? See, positive thoughts, if I am creating, then of course this is a self-talk. है ना? Thoughts क्या होते हैं? मान लीजिए, if I'm meditating, if I'm thinking something, तो हो क्या रहा है? We are having a conversation. है ना? They are one and the same thing. But धीरे धीरे when we start practicing it, तो क्या होता है? Subconsciously, है ना? We are not putting efforts, अपने आप ही पॉजिटिव चलने लग जाएगा, राइट? जैसे आजकल नेगेटिव ऑटोमेटिकली चलता है, जब अपने आप पॉजिटिव अपने आप चलने लग जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में इतना अच्छे से फीड हो जाएगा, देन इट हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, हमें कुछ एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा. बट यस, this is one and the same thing, positive self-talk or positive thoughts, because thoughts क्या है? वो अपने आप से कन्वर्सेशन ही तो है. Right. All right, sir. So, sir, I would like to thank you for this informative session from everyone's end. This is a quite informative session, and plus today we are able to know the importance of positive self-talk, positive affirmation in our daily lives via this session. So I would like to end this session, and I really would thank you for this great session with us. Thank you very much. Thank you so much.